So it's 9:30 p.m. right now, and I am currently in Dharamshala. I left Mohali around 4 a.m. in the morning, and I reached here around 8. On our way to Dharamshala, we just randomly decided to stop and have chai and Maggie. And there was a pet parrot there, and I was so happy to see the parrot not caged. And honestly, the cutest part is that when we started having Maggie, he actually came to our table. So we offered him some Maggie and he ate with us, and that was so cute, I think. And then there was another little dog as well. And if you know me, you know I love dogs. I love all animals, but like dogs have my heart. Yeah, and then I don't think we stopped anywhere else. I reached around 8 a.m. yes, and then I checked into my hotel. I was so hungry, so I ordered uttapam. So because I hadn't slept, I decided that I'll just quickly take a nap. A nap turned into a full cycle of sleep. So I slept till 3:30, and then when I woke up, I was hungry again. And I ordered a club sandwich and some chai, and then Archit also came, so I ordered more chai for him. बार full हो रही है मेरी storage. हाँ, तो फिर I quickly got ready, then left for a mini drive. हमने छोटू सी ड्राइव करी around the tea garden area, and थोड़ा he showed me around. And then we stopped for coffee. We had some coffee, I had ginger lemon tea, and he dropped me off back again. India Pakistan का match चल रहा था, and India won. We also ordered this deep dish pizza. It came, and it was definitely not deep dish. It was flat. So that is all that happened till now. Now what I'm gonna do is quickly wash my face, and then I'm gonna do my skincare and then my medication for my skin. Basically, I'm going through a treatment for my acne and acne scars. I was breaking out like crazy, and then the scarring was also like really red purplish, and then it was showing a lot, so I decided to भाई बहुत डिप्रेसिंग है. मतलब अकेले ब्रेकफास्ट बुफे. अर्चित इज लाइक कि तू जाएगी ब्रेकफास्ट, उसने इंक्लूड करा दिया ब्रेकफास्ट. मैं अकेले ब्रेकफास्ट बुफे में बिल्कुल नहीं जाऊंगी. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन है. मुझे बनने की कोशिश भी नहीं करनी है कि वो भाई मैं ऐसी नहीं हूँ. मैं नहीं जा सकती अकेले ब्रेकफास्ट बुफे. उसको भी समझा दिया, नहीं जा सकती. सम पीपल फाइंड रिमूविंग मेकअप टू बी वेरी सैटिस्फाइंग. अच्छा लगता है, नो. ओ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. मुझे बहुत ही टीडियस टास्क लगता है यार. मतलब मैं उसकी कितना भी ग्लोरीफाई कर दूँ ना, कैंडल जला लूँ या वीडियो बना लूँ. छाता लेना पड़ेगा. A few moments later. So, मेरी मम्मी का आज बर्थडे है, और उन्होंने स्पेशली मुझे रिक्वेस्ट किया है, और वो मुझे मतलब बहुत टाइम से रिक्वेस्ट करी है कि उनको बर्थडे पे क्या चाहिए. वो ये है कि मैं उनके लिए गाना गाऊं, मतलब गाना रिकॉर्ड करके उनको भेजूं ताकि वो सबको सुना पाए और स्टोरी. जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, फिर चाहे जो भी कहे हमको ज़माना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी.
Bro. इसको क्या हो गया? Whoa. वाह back to work tomorrow. कल we leave early morning, फिर उसके बाद ऑफिस. दोबारा से वीक आ गया, वीकेंड ख़त्म, दोबारा से पूरे हफ्ते काम करना है. बट इस वीक में डिफरेंट ये है कि आई विल कीप व्लॉगिंग, सो स्टे ट्यून्ड. आई एम गोइंग टू कीप अपलोडिंग, like I'm gonna be at it. I think yeah, that's it. So thank you for being here with me and love you all so much. एक slow mo तो बनता है ना? I love slow mos. I love making slow mos. I love romanticizing myself.